everyone. Today with us we have Rajvi Shah Mehta, an innovative geotechnical engineer having a comprehensive 3 years experience in soil and rock behavior. Currently, she is a technical manager in the field of the geotechnical engineering, Bhumi Research Center. On behalf of Parul University, I warmly welcome you to share your expertise on soil mechanics, compaction, and consolidation. Ma'am, you can continue. Okay. Good morning, everyone. So, first of all, I thank Parul University for providing me opportunity to entertain you all. Uh, Today our topic is Introduction to Soil Mechanics, Compaction and Consolidation. So, first of all, uh, अभी सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स क्या है वो सिर्फ समझेंगे और हमारा डिटेल होगा कंपैक्शन और कंसोलिडेशन पे. ओके. सो नेक्स्ट. So today in our presentation we are dealing with this four topic: introduction to soil mechanics, then why soil investigation is required, then compaction, and then consolidation. So first, introduction to soil mechanics. So first question come into our mind is what is soil mechanics? Soil mechanics क्या है? हम लोग बोलते तो रहते हैं soil mechanics पर soil mechanics क्या है? जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स है, फिजिक्स है, तो फिर सॉइल मैकेनिक्स अलग ब्रांच करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो soil mechanics is a branch of soil physics and applied mechanics that describes the behavior of soil. और अभी हम हमारे पास अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच थी, फिर भी हमने सॉइल मैकेनिक्स इसलिए किया क्योंकि जो हमारी बिहेवियर ऑफ सॉइल है वो काइंडली डिफरेंट है बिहेवियर ऑफ सॉलिड से, बिहेवियर ऑफ मटेरियल से. क्यों? क्योंकि सॉइल कंसिस्ट ऑफ heterogeneous mixture of fluids, heterogeneous mixture of fluids and most likely air and water, and also particles of soil that may contain organic solids and matters. That's why it is different from fluid mechanics, and uh, we need to do some analyze regarding soil mechanics. So इसलिए soil mechanics जरूरी है. Now soil mechanics is used to analyze the deformation and flow of fluids uh, within the man-made structures that are supported on or made of soil. Like supported on soil means the buildings, the entire structures which are supported on soil. So behavior of we need to understand the behavior of soil. The soil mechanics is used for that. And made of soil like earthen dam and those things are made of soil, so for that also we need to understand the soil mechanics. So soil mechanics is used in all these purpose, like building foundations, retaining wall, dam, as I said the examples. Now the next. Now what is soil investigation? So soil mechanics में ये सब चीज इंक्लूड होती है. अब soil mechanics का एक पार्ट है soil investigation. And soil investigation क्या है? तो soil investigation is the process to determine surface and subsurface soil condition features in an area of proposed construction that may influence the design and construction. अगर हम soil investigation को दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो soil और investigation. soil मतलब अगर मैं प्योर लेबर लैंग्वेज में बोलूँ तो soil मतलब मिट्टी, और investigation मतलब to investigate, to examine. So हमारा एम soil investigation में वही है कि हम जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द सॉइल फॉर द पर्पस लाइक मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे क्या जो भी बनाना हो वो पर्पस के लिए वो सॉइल प्रॉपर है या नहीं, इज इट प्रॉपर फॉर दैट पर्पस. सो फॉर दैट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द सॉइल एंड इट इज कॉल्ड सॉइल इन्वेस्टिगेशन, एंड also it is known as soil exploration. So in soil exploration, site visit, quick visual inspection, detailed test, all things are included in soil exploration. And if I said you that it cost very low of the total project cost, so we need to do this soil investigation, because by doing this soil investigation only we can do the best design. So that's why soil investigation is needed.
Next. So here you can see that some unsung heroes of civil engineering, like it is very very untouched branch, because normal people see only the structures which are above the road, which are below the road they cannot see. And our main geotechnical engineer works are for uh, under the road, uh, under construction, like you can see here that foundations, you can see here tunneling, you can see here soil exploration. These all works are for geotechnical engineering. So I can say some unsung heroes of civil engineering buried right under your feet. Okay, now I want to show you some geotechnical engineering landmarks, uh, like this dam. uh, Here geotechnical engineering is required. This world tallest building in Malaysia, here also geotechnical engineering required. This is a structure in Italy, this is in Greece, Egypt, this is in Singapore. These all structures are the landmarks for geotechnical engineering. Now we can see सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है. What are included in soil mechanics? So soil classification, soil mineralogy, index properties of soil, engineering properties, swelling properties, shear strength, compaction, consolidation, slope stability, analysis of all these things. These all things are included in soil mechanics. But right now we are only focusing on this compaction and consolidation. Okay, so we are again we progress in our presentation. First part, that is compaction. मुझे आप सबसे मतलब एक चीज है, कॉम्पैक्शन वर्ड जब हमारे माइंड में आता है तो हम सोचते हैं कॉम्पैक्शन मतलब क्या, मतलब कॉम्पैक्शन मतलब किसी भी चीज को कॉम्पैक्ट करना. अब हियर यहाँ पे हमें क्या देखना है, सॉइल कॉम्पैक्शन. तो सॉइल कॉम्पैक्शन मतलब सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है. तो अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है तो उसे ही सॉइल कॉम्पैक्शन कहते हैं. और उस डेफिनेशन के लिए हम देखें तो सॉइल कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस in which stress is applied to a soil cause densification as air is displaced from the pores between the soil grains. या सॉइल का अगर आपको बेसिक पता हो तो सॉइल एक थ्री फेज डायग्राम है. सॉइल में पानी भी है और एयर भी है. सॉइल इज अ थ्री फेज डायग्राम एंड इन सॉइल there are pores, and in pores there are water also, and there is air also. So soil compaction में क्या होता है, in soil compaction we apply the load above the soil and only air is displaced. Water is not displaced in soil compaction, only air is displaced, and because of displacement of air soil becomes dense, and this densification process is known as the soil compaction. अगर हम डायग्राम में देखें तो जैसे ये हमारे ग्रेन्स है, ये बीच में पोर्स है. अब ये जो बीच में जो पोर्स है ये एयर वाले पोर्स है और वाटर भी है. अब ये चीज यहाँ पे जो है, अब हम कॉम्पैक्शन हम ऊपर से लोड देना चालू करेंगे. इफ वी अप्लाई द लोड एंड देन we can see that water is there only, but this air portion, this air in the voids are decreasing and the soil become dense. So easy language में by this diagram also you can understand easily that what is soil compaction. Um, as I said earlier, it is defined as the method of mechanically increasing the density of soil by reducing volume of air. Here, mechanically, we increase the density of soil by applying the load. This load can be applied by any means. So, this is by mechanical effort only. So it is defined as the method of mechanically increasing the density of soil by reducing the volume of air.
we are only reducing volume of air. There is no reduction in volume of water. Water is as it is. So keep this thing in your mind, that in compaction there is only reduction of volume of air. There is no reduction in volume of water. Okay. This is also another picture, that these soil grains are there here. There is voids, and in these voids air is present. Soil before compacted, after compaction it is somewhat like this. Here also one example, soil before compacted, here soil grains, here it is voids. In voids there is air and water, and after we apply the mechanical effort, and we can see that here compacted soil is there. And if we want to understand it by the diagram, three phase diagram, so you can see this, that here soil, water and air is there. Here this is air, and here this is water. And if I explain this in three phase diagram, then it is solid, here it is water, here it is air. And after applying the load, after applying the mechanical effort, soil is compacted. Here water is present as it is, but these voids are decreasing. And if I here the volume is more, and here volume is less, here soil density increasing. And this soil density is increased only by reduction in volume of air. There is no reduction in volume of solids and no volume of water. This density is increased only by reduction in volume of air. Okay. Next. सो सॉइल कॉम्पैक्शन डिजायर्ड है या नहीं है, होना चाहिए, सॉइल प्रॉपर कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब मैकेनिकल है, ये सब मैनमेड प्रोसेस है। ये प्रोसेस वो वाली प्रोसेस मतलब नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो ये हमारे हाथ में है। तो ये इज इट्स रिक्वायर्ड, इज इट डिजायर्ड और नॉट? सो अगर मैं बोलूं इन कंस्ट्रक्शन पर्पज सॉइल कॉम्पैक्शन इज डिजायर, बट in agriculture purpose soil compaction is not desired. But here we are talking about only construction purpose, so yes, soil compaction is very much required. You can see this picture, it is the Pisa Tower. Actually this is a blunder of geotechnical engineering, and now it is known as one monument. So our mistake turned into one monument. Here's this tower is built on soft soil, uncompacted soil, and because of this there is leaning in this tower. And now this is one monument, this is one monument. So it is because of our mistake, हमारी गलती हुई थी, पर वो गलती अब एक attraction बन गई है. So the second one is here it is you can see that this house and this soil is not compacted properly, and the house is built exactly like this Pisa Tower. This house due to after some years, due to some settlement and deformation, this house lean like this. But instead of this uncompacted soil, if we build this house in this compacted soil, so it can last like this, and no leaning in this house. So this is one example of soil compaction. ऑल्सो रिजल्ट्स ऑफ मतलब अगर कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मैं आपको ये फिगर के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगी. You all can see here that it is basement and pool cracks and leaks. If soil is not proper compacted, then यहाँ पे हम लीकेज वगैरह पॉसिबल है. स्लैब में भी क्रैक पॉसिबल है. ये पाइपलाइन जा रही है और सॉइल प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड नहीं है, तो पाइपलाइन ब्रेक हो सकती है. अगर आप यहाँ पे देखें तो फाउंडेशन में इरोजन होने के भी चांसेस है ड्यू टू अनकॉम्पैक्टेड सॉइल.
So these all are the things that that is occurred because of with low compaction, because of bad compaction of soil. So in after knowing all these things, I can say that soil compaction is very much required. Without compaction, we have to deal with this kind of failures, this kind of hazardous deformation. Next. So after seeing this that earlier picture, after seeing that early this picture, we can understand easily that objectives of compaction are, what are the objectives of compaction. So objectives of compaction are to increase the shear strength. कॉम्पैक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें सॉइल की shear strength अगर इंक्रीज करनी है तो फॉर दैट पर्पस सॉइल कॉम्पैक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. फिर टू रिड्यूस द परमिएबिलिटी, इफ हमें सॉइल की परमिएबिलिटी को कम करना है, सॉइल की जो परमिएबिलिटी है उसको लो करना है, तो हमें कॉम्पैक्शन सॉइल में करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर सॉइल में पोर्स रहेंगे तो सॉइल की परमिएबिलिटी ज्यादा रहेगी तो पानी इजीली फ्लो हो जाएगा. पर अगर पोर्स ही कम होंगे, अगर सॉइल प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड होगी, वॉइड्स कम होंगे, तो we can reduce the permeability. Also third point is to reduce the compressibility. We have to reduce the compressibility also. So अगर जितनी सॉइल कॉम्पैक्टेड होगी तो वो कंप्रेस कम होगी. आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर सॉइल प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड नहीं है और ऐसी सॉइल को ऊपर से मैं लोड दूंगी तो वो कंप्रेस हो जाएगी. बट इफ सॉइल इज compacted properly and if I apply the load from above, then it cannot, there is no compression in soil. Fourth one is control swelling and shrinkage. So shrinkage और swelling properties soil की बहुत ही important है. Swelling and shrinkage property is important because foundation, if the soil which is the soil on which we put our foundation is about to swell or is about to shrink, then there may be failure in foundation. So for that purpose also, for controlling swelling and shrinking property of soil also, compaction is very much required. Also this compaction provides the stability. You can understand that if we do compaction properly, then our foundation is more stable than on uncompacted soil. So for these all reason, for all these objectives are the compaction objectives. Next. So I want to share some examples with you. Like you can see, if the first point is to increase the shear strength of soil. So agar poor compaction, if there is poor compaction, then we cannot, this road is like this way and it cannot handle the load. So bearing capacity is low. But instead of this, if we do this good compaction, then the bearing capacity increased and durability is also increased. Okay, the second example is this second example is this tunnel. Here in tunnel, there is there is slab in, there is here road. If this soil is not proper compacted, there are chances of breakage of this road. But if soil is properly compacted, there is no deformation here. So higher resistance to deformation, higher resistance to frost damage. Here also there is retaining wall
and in retaining wall, backfilling soil is not, if backfilling soil is not properly compacted, then there is it reduce your stability, it increase your permeability. But instead of this, if my soil is properly compacted in backfill portion, then its stabilities will be increased and permeability will be decreased. So these are the examples. You can easily differentiate, like if poor compaction then this happen, and if good compaction then this will happen. So it will you can relate this very easily. Next. Now, what factors affecting the soil compaction? Like, what are the factors that affect the soil compaction? First, obviously, the type of soil being compacted, it is the most dominant factor which affect the soil compaction, that type of soil being compacted. The next one is water content of soil. If our water content is very high, then also compaction is not proper. So water content of soil is also very much important factor for soil compaction. Then next one is compaction effort required. Compaction effort required means by which mechanical efforts you do compaction. These also affect your soil compaction. If you do compaction by roller, and then we can get some different compaction, and if you do your compaction by vibratory rollers, vibrator, then also we can get some different compaction. So compaction effort required is also affecting factors for soil compaction. Then compaction method, by which method we do compaction, these also affect our compaction. And thickness of layer, this thickness of layer is very much important factor, because if I want to compact the soil in about 2 meter, 2 meter there, 2 meter height, and if I do 2 meter height soil filling and then do compaction, there is one option. Second option, if I want to do this 2 meter height soil compaction, so first I fill the soil up to 1 meter, then compact it. Again I fill the soil next 1 meter, then again compact it. So here in first case I do, in first पहले केस में मैंने ऐसा किया कि मैंने पूरी सॉइल 2 मीटर के 2 मीटर तक पूरी सॉइल मैंने फिल कर दी और फिर कॉम्पेक्शन किया. इन सेकंड केस मैंने ऐसा किया कि 1 मीटर तक सॉइल फिल की, फिर कॉम्पेक्शन किया, फिर अगेन 1 मीटर तक सॉइल फिल की और कॉम्पेक्शन किया. तो इन दोनों केस में मुझे जो सेकंड केस है मेरा, कि जिसमें मैंने 1-1 मीटर पे किया, तो उसमें मेरा कॉम्पेक्शन ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मेरा लेयर कम था और मैंने 2 बार कॉम्पेक्शन किया. सो थिकनेस ऑफ लेयर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं है कि अगर 5 मीटर में मुझे फिलिंग करनी है तो मैं 5 मीटर का पूरा फिल कर दूं और फिर कॉम्पेक्शन कर दूं, तो मुझे प्रॉपरली कॉम्पेक्शन नहीं मिलेगा जैसा मुझे मिलना चाहिए. तो जब भी हमें ऐसा ज्यादा कॉम्पेक्शन करना है, तो हमें सॉइल डेप्थ को कुछ इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना है और फिर वहां पे कॉम्पेक्शन करना है सॉइल फिल करके. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. थिकनेस ऑफ लेयर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. हमें लगता हम अगर ये फैक्टर्स देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये थिकनेस ऑफ लेयर क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर. लाइक हमें कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, मतलब कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि सॉइल भी मेरी अच्छी है, वाटर कंटेंट भी अच्छा है और मैंने रोलर से ही कॉम्पैक्ट किया है, तो फिर क्यों मेरा कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो क्योंकि उसने जिस थिकनेस में करना चाहिए वो थिकनेस में नहीं किया. तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. सब कुछ सही है, पर अगर एक ये चीज भी गलत हुई तो कॉम्पैक्शन जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिल सकता है. सो इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट, ये हमने सारी चीज जो देखी वो ओवरव्यू देखा कॉम्पैक्शन का, कि कॉम्पैक्शन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है. अभी कॉम्पैक्शन
तो देख लिया, अभी उसमें क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट है, लेबोरेटरी में क्या प्रोविजन है, तो वो हम देखेंगे। तो दो टाइप, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हम IS कोड 2720 पार्ट 7 फॉलो करेंगे, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर में IS 2720 पार्ट 8 फॉलो करेंगे। So there are two types of test: standard proctor test and modified proctor test. You can see in this image that this is standard proctor test, this is modified proctor test. So what are the difference between the standard proctor test and modified proctor test? दोनों की कॉम्पैक्शन एफर्ट में डिफरेंस है, फिर नंबर ऑफ लेयर्स में हम जो लेयर में हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है, जो ब्लोज हम मार रहे हैं उसमें डिफरेंस है, फिर हाइट ऑफ फॉल कितना रखना है, तो सारी चीज डिफरेंट है। हमें कौन सा मोल्ड यूज करना है तो वो भी डिफरेंट है। अगर आप ये इमेज देखेंगे तो ये है फॉर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, कि हमारा जो मोल्ड होगा जिसमें हमें सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है, तो वो मोल्ड हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब का होगा। देन सॉइल को हमें 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करना है, मतलब मैंने एक लेयर में कॉम्पैक्ट की सॉइल, फिर एक लेयर मैंने फिल किया, लेयर फिल करने के बाद मुझे हैमर से कॉम्पैक्शन करना है, हैमर से ब्लोज मारने हैं, तो जो 25 ब्लोज है तो मैंने 25 ब्लोज हैमर से मार लिए, और मेरी जो हैमर होगी ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर के लिए तो वो 2.5 kg हैमर होगी। अब 2.5 kg हैमर से आई डू द कॉम्पैक्शन एंड आई डू ब्लोज ऑफ 25 नंबर ब्लोज। नाउ द नेक्स्ट लेयर, सो फॉर नाउ आई दूसरा लेयर में फिल करूंगी, उसके बाद दूसरे लेयर में भी सेम वे मुझे 25 ब्लोज मारने हैं, फिर मुझे तीसरा लेयर फिल करना है और तीसरे लेयर में भी मुझे 25 ब्लोज मारने हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा मोल्ड मुझे फिल करना है और हर एक लेयर पे मुझे 25 ब्लोज मारने हैं। और मेरा जो हाइट ऑफ फॉल है जहां से मुझे हैमर को ड्रॉप करना है, तो वो हाइट ऑफ फॉल मेरा 300 mm होगा फॉर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। अभी आप देखेंगे ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर के बारे में, तो इन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट मेरा जो मोल्ड की साइज है वो 2250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब का था, वो ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर में हमारा 2250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में हम सारे हमारी जो मोल्ड है उसमें सॉइल को हम 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करते थे, वेरी इन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट वी हैव टू कॉम्पैक्ट सॉइल इन 5 लेयर्स। In standard proctors we use 2.5 kg hammer, in modified proctor we use 4.9 kg hammer। यहाँ पे 25 blows per layer थे, यहाँ पे 55 blows per layer है। and here 300 mm height of fall, here height of fall is 450 mm। सो डिफरेंस सिर्फ इतना है, हैमर का हाइट ऑफ फॉल का नंबर ऑफ ब्लोज का रहेगा, मोल्ड हमारा चेंज होगा, और जो कॉम्पैक्शन मेथड है वो सिमिलर रहेगी। लाइक हमें जो भी हमारी सॉइल है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला एक लेयर किया, एक लेयर करके उस पे 55 ब्लोज से हमने हैमरिंग की, उसके बाद सेकंड लेयर उसमें भी 55, वैसे हमें 5 लेयर करने हैं। जैसे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में हमने 3 लेयर किए, वैसे यहाँ पे 5 लेयर करने हैं। अभी एक मिनिमम वाटर कंटेंट होगा जहां से मैंने स्टार्ट किया, वो सॉइल टाइप, दिस वाटर कंटेंट जहां कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है वो सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है। तो जो मेरी सॉइल है उसके हिसाब से मैंने एक मिनिमम कंटेंट डिसाइड किया, सॉइल के वेट के हिसाब से वो परसेंटेज वाटर मैंने उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद इस तरीके से मैंने मोल्ड फिल किया, मोल्ड फिल हुआ, मोल्ड का वेट ले लिया, एम्प्टी मोल्ड का वेट मेरे पास है, सॉइल के साथ मैंने वेट ले लिया, और उसी मोल्ड में से बीच में से, सेंटर में से, ना ही ऊपर से ना ही नीचे से, सेंटर में से मैंने कुछ सम पोर्शन ऑफ सॉइल निकाल ली फॉर वाटर कंटेंट। ऐसा एक बार किया, फिर दूसरी बार भी किया, फिर तीसरी बार किया, वैसा मुझे कंटिन्यूअसली सेम प्रोसेस करनी है। कब तक? जब तक एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट पे हमारा मोल्ड का वेट कम होगा। पहले मैंने जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि मैंने 3% वाटर कंटेंट से स्टार्ट किया, तो मैंने अपनी सॉइल जितनी 10 kg सॉइल ली हो, तो 10 kg सॉइल
में 10 kg का 3% जितना वेट ml वाटर मैंने उसमें ऐड किया। अभी वो सॉइल मेरी मिक्स प्रॉपरली मिक्स कर ली और मैंने मोल्ड फिल कर लिया। मोल्ड फिल करने के बाद मैंने वो मोल्ड का वेट लिया और वो मुझे मुझे एक वेट मिला, मैंने नोट कर दिया और बीच में से मैंने सैंपल निकाल दिया और उसका वाटर कंटेंट के लिए मैंने मेजर करने के लिए निकाल दिया। अभी वापस मैंने ये सारा मोल्ड खाली किया, वापस मैंने मोल्ड फिल किया और वही प्रोसेस फॉलो करके मैंने वापस वेट लिया। तो मुझे पहले जो वेट मिला था उससे मेरा वेट बढ़ेगा क्योंकि मेरा वाटर कंटेंट मैंने उसमें 2% ऐड करके वापस डाला है। तो वैसा मैंने 2% ऐड करके मैं वापस कर रही हूँ, मुझे वेट बढ़ रहा है मेरा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मेरा वेट कम होगा। तो मैं जिस पॉइंट पे मेरा वेट कम हो रहा है उसके बाद एक ट्रायल और करनी है मुझे, और आफ्टर डूइंग दैट लास्ट ट्रायल आई स्टॉप माय टेस्ट and for each trial I've taken water sample for water content. So next day मुझे water content मिल जाएगा और यहाँ पे मेरे पास weight volume वगैरह है तो मुझे volume भी मिल जाएगा। तो मेरे पास डेंसिटी हो जाएगी और कौन से मॉइस्चर पे मुझे वो डेंसिटी मिली वो भी मुझे पता चल जाएगा। So after doing all these tests, for calculation purpose, I have to मतलब एक ये टेस्ट किया तो मुझे सबके माइंड में क्वेश्चन होता है कि मुझे ये टेस्ट से क्या मिलेगा, मेरा ये टेस्ट से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, आउटकम क्या मिलेगा। तो ये टेस्ट से मुझे आउटकम ये मिलेगा कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है। मतलब मैंने जैसे बोला आपको कि एक वेट तक मेरा वेट बढ़ेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मेरा वेट कम होगा। जब जिस पॉइंट पे मेरा वेट कम हो रहा है उसके बाद मुझे एक और ट्रायल करनी है और तब टेस्ट खत्म करना है। अभी मेरे पास एवरी ट्रायल का वाटर कंटेंट भी है, बल्क डेंसिटी भी है, तो मुझे उसकी ड्राई डेंसिटी इजीली मिल जाएगी। तो मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट का। तो मेरा ये जो ग्राफ प्लॉट होगा ना वो ग्राफ का जो ये पीक पॉइंट होगा वो पीक पॉइंट से मुझे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी। तो ये टेस्ट करने से मुझे दो रिजल्ट मिलते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट मिल रहा है उसको मैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहूंगी। क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा है जहां अगर मैं उतना मॉइस्चर कंटेंट उसमें डालूंगी और प्रॉपर कॉम्पैक्शन एफर्ट कराऊंगी तो मुझे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मेरी अचीव होगी। सो ये ग्राफ भी आप इजीली देख सकते हो कि इट इज ऑब्जर्व दैट ड्राई डेंसिटी इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट टिल द मैक्सिमम डेंसिटी। After further increase in water content, dry density decreases. So that's why it is the maximum dry density and for water content is optimum water content. So this is very important graph for our this, and we get this graph for both the Proctor test, standard Proctor test and modified Proctor test. Now next, फील्ड कॉम्पैक्शन। सो अभी इस तरीके से लेबोरेटरी में तो मुझे एक डिजायर्ड वैल्यू मिल गई। अभी फील्ड में कॉम्पैक्शन मतलब क्या होगा फील्ड में। तो फील्ड में क्या होता है कि कॉम्पैक्शन अगर मुझे करना हो, जैसे यहाँ पे हमें कॉम्पैक्शन में हम एक डेंसिटी निकालने के लिए हैमर यूज करते हैं, पर फील्ड में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पैक्शन इन फील्ड डन विथ रोलर्स and most common type of roller are smooth wheel roller, pneumatic rubber trial roller, shift foot roller, vibratory roller. So field में mostly compaction roller से होता है। उसके बाद अगर जैसे मैं कौन से में अलग अलग रोलर यूज होते हैं, जैसे ग्रैन्युलर सॉइल है तो जनरली वाइब्रेटरी रोलर इज मोर प्रिफरेबल एंड इफ आवर सॉइल इज लाइक अ क्ले या सिल्टी टाइप देन शिफ्ट फुट roller can be used. For clay and silt, vibratory rollers are not advisable. And in most specifications for earthwork, the contractor is instructed to achieve degree of compaction is 90 to 95%. Like 90 to 95% means
from laboratory test results we get the maximum dry density and optimum moisture content. If in field we do the compaction for this density and achieve this density and moisture content, we cannot achieve 100%, but we have to achieve this 90 to 95%, and we have to check regularly for earth work, like in regular interval, that the compaction, if we do compaction, then it is above 90%, above 95%, that tender requirements are different. So this degree of compaction is different, but mostly 90 to 95% are desirable. So compaction is over. Anyone have any questions regarding compactions, or shall I further move ahead? Hello, hello, hello. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Hello. Hello? Hello. Yes, ma'am, Actually, you are it audible, is ma'am. live on Facebook. Okay, so I move further ahead. Okay. So next our topic is consolidation. First, what is consolidation? लाइक कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन, कई बार लोग कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं. मतलब कॉम्पैक्शन में भी सॉइल को कॉम्पैक्ट हो रही है, कंसोलिडेशन में भी सॉइल कॉम्पैक्ट हो रही है, तो फिर लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है और कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में वो लोग गलती कर देते हैं. तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कंसोलिडेशन. तो consolidation is natural process here by which soil changes volume gradually in response to a change in pressure. लाइक ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हम अचीव नहीं कर रहे हैं, मतलब हम मैकेनिकली इसे अचीव नहीं कर रहे. ये नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे लोड चेंज होगा वैसे वैसे सॉइल ग्रेजुअली अपना वॉल्यूम चेंज करेगी. It happens because soil is a three-phase material: soil, grain, and pore water. Now, a process which involves a decrease in water content of saturated soil without replacement of water by air. यहाँ पे सॉइल का जो डिक्रीज, यहाँ पे जैसे मैंने कॉम्पैक्शन में बोला था कि यहाँ पे जो डेंसिटी हो रही है, सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एयर, नॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर. बट इन कंसोलिडेशन ये जो हमारा डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम सॉइल का, वो दिस डिक्रीज इन soil volume is only because of decrease in volume of water, not in air. So this is the main difference between consolidation and compaction, and it is time dependent process. In some soil it may take long years to complete the consolidation, so it is time dependent process. We cannot achieve it instantaneous. Now, it is very much important to predict soil consolidation, rate of consolidation, total consolidation to be expected. जैसे हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अभी के अभी कंसोलिडेशन नहीं होने वाला है, पर हमें ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही जरूरी है कि टाइम बीइंग जब इस पे ऐसा लोड आएगा तो ये यहाँ की जो सॉइल है उसका कंसोलिडेशन ये होगा, उसका रेट ऑफ कंसोलिडेशन ये है और टोटल कंसोलिडेशन इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू प्रिडिक्ट करना, क्योंकि कंसोलिडेशन की वजह से जो हमें सेटलमेंट मिल रहा है, तो सेटलमेंट इज वेरी, टू नो द सेटलमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्ट्रक्चर. So for that reason, it is very much important to predict the soil consolidation. Now the soil consolidation is caused by deformation of soil particles, relocation of soil particles, and expulsion of water from void spaces. Now most of the settlement of structure on clayey soil is mainly due to volumetric change. So mainly due to this consolidation process. So for that reason only, it is very much important to predict the soil consolidation.
नाउ अगर मुझे सॉइल कंसोलिडेशन को समझना है, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड सॉइल कंसोलिडेशन, सो द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज एक्सप्लेन्ड विथ एन आइडियलाइज्ड सिस्टम composed of a spring and a container with a hole in its cover, and water, it is called spring analogy. spring analogy के यूज करके हमें कंसोलिडेशन की प्रोसेस इजीली समझ सकते हैं. जैसे if you can see in this figure 1 2 3 4, here spring is there, cover is there, here hole is there, एंड यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है. सो अगर आप पहला नंबर देखेंगे तो द कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर एंड द होल इज क्लोज. फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल. फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में जो भी हमारी सॉइल पार्टिकल्स के वॉइड, सॉइल का वॉइड्स है, तो वॉइड्स में पूरी तरह से वाटर फिल हुआ है. तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ये जो हमारा फिगर है वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ यू कैन सी इन दिस सेकंड figure, load is applied onto the cover while the hole is still unopened. लोड हम अप्लाई कर रहे हैं बट ये जो हमारा होल है वो अभी ओपन नहीं है. एट दिस स्टेज ओनली द वाटर रेजिस्ट द अप्लाइड लोड. अभी यहाँ पे वाटर ही, मतलब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो स्प्रिंग में कुछ नहीं होगा. जो वाटर है वही वो अप्लाइड लोड को रेजिस्ट करेगा. तो ये स्टेज में हमें क्या, यहाँ पे जो पोर वाटर का है, पोर वाटर का प्रेशर डेवलप होगा. अब जैसे ही होल को ओपन किया जाएगा, एज सून एज द होल इज ओपन, वाटर स्टार्ट्स टू ड्रेन आउट थ्रू द होल एंड द स्प्रिंग शॉर्टन्स. आप यहाँ पे जैसे देखोगे तो जैसे ही होल ओपन होगा तो वाटर बाहर चला जाएगा. तो अभी जो लोड है वो स्प्रिंग ले रही है, तो स्प्रिंग हमारी कंप्रेस होगी. the drainage of excess pore water pressure, and if you can see in this figure 4, after some time the drainage of water no longer occurs. अगर मेरा लोड वही रहेगा तो एक टाइम के बाद वाटर यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा. now the spring alone resists the applied load. यहाँ पे ये जो पोर्शन है वहाँ पे स्प्रिंग ही है जो अप्लाइड लोड को रेजिस्ट कर रही है. तो यहाँ पे फुल्ली वाटर हमारा डिसिपेट हो गया, तो हमारा कंसोलिडेशन खत्म हो गया फॉर दिस लोड. अभी हमें और पानी को निकालना है. तो अगर मैं लोड बढ़ाऊंगी, अगर इफ आई एक्सटेंड माई लोड, देन कंसोलिडेशन अगेन स्टार्ट होगा. अगेन ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी और एक पॉइंट आएगा जहां पे कंसोलिडेशन हमारा एंड होगा. तो कंसोलिडेशन को हम ये स्प्रिंग एनालॉजी से इजीली समझ सकते हैं. Now there are two types of consolidation, primary and secondary. Primary consolidation is one dimensional consolidation, and then secondary consolidation, प्राइमरी कंसोलिडेशन में जैसा हमने स्प्रिंग एनालॉजी में देखा कि वाटर, एक्सेस वाटर बाहर निकल रहा है, तो एक पॉइंट तक वो बाहर निकलेगा, उसके बाद वो बाहर निकलना बंद हो जाएगा. तो प्राइमरी कंसोलिडेशन हमारा खत्म हुआ. और उसके बाद प्राइमरी कंसोलिडेशन जब हमारा खत्म होता है, देन ओनली इट टेक्स सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस. And even after reduction of hydrostatic pressure, some compression of soil takes place at slow rate. सेकेंडरी कंसोलिडेशन में सॉइल का कंप्रेशन बहुत ही स्लो रेट में होगा. एंड ये जो है हमारा, उसे सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहते हैं. नाउ लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कंसोलिडेशन. सो उसमें हम IS 2720 पार्ट 15 फॉलो करते हैं. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सॉइल कंसोलिडेशन व्हेन द सॉइल इज लेटरली रिस्ट्रेन्ड एंड लोडेड एक्सियली. यहाँ पे ये कहाँ पे यूज होता है, तो टू डिटरमाइन द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सॉइल कंसोलिडेशन. जैसे मैंने बताया कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द कंसोलिडेशन, टू रेट ऑफ कंसोलिडेशन, टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन. सो ये लेबोरेटरी टेस्ट हम करते हैं. तो लेबोरेटरी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सॉइल कंसोलिडेशन व्हेन द सॉइल इज लेटरली रिस्ट्रेन्ड एंड लोडेड एक्सियली. मतलब लेटरली सॉइल को हम रिस्ट्रेन करते हैं और उसको एक्सियली लोड दे रहे हैं. उस टाइम पे रेट ऑफ सॉइल कंसोलिडेशन क्या होगा वो डिटरमाइन करने के लिए हम ये लेबोरेटरी मेथड यूज करते हैं. इट इज वन डायमेंशन, मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन टेस्ट है. यहाँ पे जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा वो नहीं होगा. ये वन डायमेंशनल कंप्रेशन
टेस्ट है, बिकॉज हम ओनली वर्टिकल लोड अप्लाई कर रहे हैं, लेटरली तो ये रिस्ट्रेंट है, लेटरली कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा है. इट इज कैरिड आउट इन सैचुरेटेड सॉइल स्पेसिमेन. हमारा जो सॉइल स्पेसिमेन है वो पूरी तरह से सैचुरेट होगा, उसी पे ये टेस्ट परफॉर्म होगा. Then the parameter obtained by this test are used to determine the consolidation settlement and time of consolidation for a given loading state. So time of consolidation is determine करने के लिए और consolidation settlement determine करने के लिए ये हमारा ये टेस्ट हमारा यूज होता है. ऑल्सो यूजफुल इन डिजाइन ऑफ ग्राउंड इम्प्रूवमेंट मेजर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट ऑन सॉफ्ट सॉइल. सॉफ्ट सॉइल पे अगर हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है एम्बैंकमेंट का, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट मेजर करना है, तो ये सारी चीज के लिए कंसोलिडेशन, ये टेस्ट रिजल्ट्स हमारे यूज होंगे. नेक्स्ट, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये टेस्ट एपरेटस है जो हमारा कंसोलिडेशन के लिए यूज होता है. यहाँ पे कंटिन्यूअसली पानी रहता है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायल गेज रहता है और ये हमारा स्पेसिमेन रहेगा यहाँ पे. तो ये लेटरली रिस्ट्रेन है और ये पानी की जो ये पाइप है वो यहाँ तक जाती है. तो ये पूरी तरह यहाँ पे भी पानी रहेगा, तो हमारे जो स्पेसिमेन है वो फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा. और यहाँ पे ये जो स्टैंड दिया हुआ है, यहाँ हम डायल गेज लगाते हैं, तो हमारी सॉइल कितनी कंप्रेस हुई ये डायल गेज से हम मेजर करेंगे. और ये जो लोडिंग अरेंजमेंट दी हुई है, लोडिंग आर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम वर्टिकल लोड यहाँ पे रख के वर्टिकल लोड अप्लाई करेंगे. तो और टाइम के साथ हम ये जो डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है वो मेजर करेंगे. तो 24 आवर्स तक ये टेस्ट चलता है फॉर 1 लोड. वैसे हमें 7 लोड, अकॉर्डिंग टू आईएएस हमें 7 लोड करने हैं, तो 7 दिन हमारा ये टेस्ट खत्म होने में लगता है. कंसोलिडेशन टेस्ट खत्म होने में, पूरा कंसोलिडेशन टेस्ट खत्म होने में 7 दिन लगते हैं. जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये जो है हमारा सॉइल स्पेसिमेन, को उसको डिटेल में समझने के लिए ये फिगर है हमारी. बिल्कुल ऐसी तरीके से एक वाटर बाथ होगा. यहाँ मतलब ये ऐसा इसे हम वाटर बाथ कहते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर होगा. यहाँ पे हमारा सॉइल सैंपल होगा. सॉइल सैंपल के ऊपर हम ये पोरस स्टोन रखते हैं. पोरस स्टोन के ऊपर ये लोडिंग पैड होगा. लोडिंग पैड पर यहाँ से जैसे हमने वो बताया मैंने, वैसे उसी तरीके से लोड अप्लाई होता है. और हियर देयर इज डायल गेज विच मेजर द डिफॉर्मेशन फॉर दिस लोड विथ द टाइम. और जो हमारी जो सॉइल स्पेसिमेन है उसकी जो साइज है वो 63 mm और ये 25 mm उसकी हाइट है. तो इट इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय अप्लाइंग अ वर्टिकल लोड व्हिच इज अस्यूम्ड टू एक्ट यूनिफॉर्मली ओवर द एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल. तो इस तरीके से पूरा सेटअप ये हमारा होगा. अब जैसे आप ये देख सकते हो कि कैसे, तो ये जो हमारी सॉइल होती है तो उसको हमें रिंग में प्लेस करना है, फिर हमें लोड अप्लाई करना है. हम लोड अप्लाई करेंगे और जैसे मैंने बताया कि वो डायल गेज रहेगा. डायल गेज से हम हाइट जो चेंज हो रहा है, हमारा डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, हमारे स्पेसिमेन की हाइट क्या चेंज हो रही है, वो मेजर करते हैं. 24 आवर्स तक वो रीडिंग लेने हैं. आफ्टर 24 आवर्स हमें नया लोड रखना है. तो वो नए लोड रखने के बाद भी हमें 24 आवर्स तक रख लेने हैं रीडिंग. वैसा हमें 7 दिन तक करना है. अगर 7 दिन तक मेरा ये टेस्ट चलेगा, उसके बाद ये मेरा टेस्ट खत्म होगा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले सॉलिड्स और वॉइड्स थे और आफ्टर कंसोलिडेशन ये कंप्रेस हो गया. कैलकुलेशन एंड एनालिसिस, अगर हम ये पार्ट देखें तो इसमें जैसे मैंने बताया, रीडिंग हम क्या ले रहे हैं कि विथ टाइम कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है. तो हमें जो ग्राफ प्लॉट करने होंगे, तो प्लॉट द डायल गेज रीडिंग वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ टी ग्राफ. ये स्क्वायर रूट ऑफ टी मतलब टाइम का स्क्वायर रूट निकालना है. तो ये ग्राफ हमें क्यों प्लॉट करना है, तो टू फाइंड आउट द T90. तो ये T90 क्या बताता है, T90 मतलब 90% कंसोलिडेशन होने में कितना टाइम लगेगा. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें डायल गेज रीडिंग वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ टी का ग्राफ प्लॉट करना है. और बाय यूजिंग दिस ग्राफ ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज CV. Also we have to plot the graph of dial gauge reading versus time.
From this graph we can find out the T50, and by T50 means 50% consolidation. If I want to do 50%, I want to know the time for 50% consolidation, then we have to plot this graph, dial gauge reading versus time, and from this graph we can easily find out there's T50. And by using this value also we can find out the coefficient of consolidation. Also there is third graph, plot E versus log P graph. This graph is necessary for determination of PC and CC value. PC value means pre-consolidation pressure. It is very much important to know the pre-consolidation pressure, so this graph is very much required. And this CC compression index, this is also very much important. तो अभी हमने ये दोनों टॉपिक देख लिए कि क्या कॉम्पैक्शन है, क्या कंसोलिडेशन है, दोनों को हमने समझ लिया. तो अभी हमारे पास हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आएगा कि कॉम्पैक्शन वर्सेस कंसोलिडेशन. जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जैसे हम लूज सॉइल हमारी है जिसमें 3 फेज डायग्राम है, एयर, वाटर, सॉलिड्स, और मैं अगर कॉम्पैक्शन एफर्ट्स यूज मैकेनिकल एफर्ट्स लगाती हूँ तो मेरा ये एयर वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है, और वाटर वॉल्यूम और सॉलिड वॉल्यूम वैसा ही रहेगा. तो कॉम्पैक्टेड सॉइल कुछ इस तरीके से होगी. अभी कंसोलिडेशन में क्या है, हमारी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, तो वहां पे 3 फेज डायग्राम नहीं रहेगा, वहां पे 2 फेज डायग्राम रहेगा. एयर जो है वो एयर नहीं प्रेजेंट रहेगी, ओनली वाटर एंड सॉलिड्स. एंड कंसोलिडेशन प्रोसेस के बाद मुझे जो सॉइल मेरी ये जो कंप्रेस हो रही है, तो वो रिडक्शन जो वॉल्यूम का हो रहा है वो वाटर का हो रहा है, यहाँ पे एयर का हो रहा है, यहाँ पे वाटर का हो रहा है. तो ये चीज जो है वो मेजर डिफरेंस है बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन. और अदर डिफरेंस अगर हम देखें तो जैसे कॉम्पैक्शन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और कंसोलिडेशन इज टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस, कैन अकर ओवर hundreds of years. It is we can achieve this compaction process instantaneously, but we cannot achieve this consolidation process. It is time dependent process. It is applicable to all soils. I mean, compaction we have to compact the sandy soil, we have to compact the gravelly soil, we have to compact the clayey soil, but it is applicable to only clayey soils. Consolidation process takes place only in clayey soil, so it is applicable only on clayey soils. Here decrease in air voids, here decrease in water voids, and here dynamic loads are applied in small interval. Whatever load we apply, that load of roller and whatever load we apply, it is dynamic loads, and dynamic loads are applied for small interval. Here static loading is applied, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही लोड सालों साल वही लोड रहेगा, फिर दूसरा चेंज होगा. तो यहाँ पे स्टेटिक लोड अप्लाई हो रहा है और फॉर लॉन्ग इंटरवल, नॉट फॉर शॉर्ट इंटरवल. ओके, तो ये डिफरेंस है बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन. So any questions? Here we end our topic. So if any question from your side, you can ask. Hello? 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 Any questions? Hello, Rajvi ma'am. Yes. Ma'am, if there would be any question asked by student, I'll surely pass it to you, ma'am, Okay. because this webinar is live streaming on Facebook, right? They will pass me the question, I'll pass it to you. Okay, no issue. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot, ma'am, for delivering such a knowledgeable session, ma'am. Thanks a lot. Okay, thank you.